અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં ગરમીનો કેર યથાવત રહ્યો હતો. રાજ્યમાં ઝાડા, ઉલટી, ખેંચ, પેટના દુખાવા અને ચક્કરની ફરિયાદના દર્દીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે. અમદાવાદમાં કાળઝાળ ગરમીથી વધુ 3ના મોત થયા હતા. અમદાવાદના આ આંકડા બાદ ગુજરાત રાજ્યમાં મૃત્યુઆંક 10 થયો હતો. અમદાવાદમાં શુક્રવારે તાપમાનમાં 1 ડિગ્રીનો ઘટાડો થયો હતો. તેમ છતાં ગરમીના લીધે રોગચાળામાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પણ લોકોને હીટ સ્ટ્રોકથી કોઈ નુકસાન ન થાય તે માટે પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે. अहमदाबाद में अभी जो गर्मी का टेम्परेचर है वो 45, 44, 46 तक जा रहा है. हमने करीबन 10 दिन से सभी हमारी अहमदाबाद कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट की हॉस्पिटल को स्टैंड बाय रखा हुआ है. वहाँ आइस, मेडिसिन और डॉक्टर की टीम भी पूरे टाइम 24 घंटा वहाँ रहती है. हमने पूरे एरिए जहाँ भी हमको लग रहा है कि गर्मी का टेम्परेचर जहाँ भी ज़्यादा है वहाँ पर से हमने पूरे एनजीओ अहमदाबाद के 20 एनजीओ को इसकी ट्रेनिंग दी हुई है. 108 जो इमरजेंसी सर्विस चल रही है उसको भी ट्रेनिंग दिया है कि इमीडिएटली ये जो प्रॉब्लम है बढ़ गया तो क्या इमीडिएट ट्रेनिंग देने की, तो उससे आदमी बच सकता है. गोल्डन आवर्स के अंदर क्या क्या ट्रेनिंग उसको ट्रीटमेंट देने की वो भी हमने ट्रेनिंग दी हुई है. फायर ब्रिगेड के जो जवान है जो वन एम्बुलेंस चला रहे उसको भी हमने ट्रेनिंग दी हुई है. और हमने अहमदाबाद के अंदर 20 से ज़्यादा होल्डिंग्स भी लगाए हुए हैं कि भाई ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप कैसे बाहर निकलो और कैसे कपड़ा पहनना चाहिए और कैसे कितना पानी पीना चाहिए. और हमने टेम्परेचर ગુજરાતના તમામ શહેરનું તાપમાન લગભગ 42થી 44 ડિગ્રી રહેવા પામ્યું છે. દવાખાનામાં હાલ જોઈએ તો ઢગલાબંધ દર્દીઓ હીટ સ્ટ્રોકના ભરડામાં હોમાઈ રહ્યા છે. અમદાવાદના વીએસ હોસ્પિટલમાં જ 23 કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. में अब तक टोटल 27 पेशेंट हो चुके हैं. उसमें से 2 की मृत्यु हुई है और 1 सीरियस पेशेंट है. एक जन को डिस्चार्ज किया, एक एब्सकॉन्डेड हो गया था. बाकी हमारे जहाँ जो भी पेशेंट आते हैं तो उनकी इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर देते हैं हम. आधे घंटे में उसका बुखार कम कर देते हैं. पेशेंट को तुरंत होल बॉडी स्पॉन्जिंग करते हैं. जो आइस पैक्स होते हैं वो एक्जिला बगल के अंदर, गर्दन के अंदर, जांघ के अंदर हम रखते हैं तो जिससे बड़ी जो नसें के अंदर ब्लड जो बहता है वो एकदम ठंडा हो जाए. जैसे पेशेंट को तुरंत आईवी फ्लूइड्स चालू कर देते हैं और पेशेंट को जैसी ज़रूरत हो ऐसे सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे देते हैं. तो અમદાવાદના તમામ રસ્તાઓ પર નજર કરીએ તો રોડ સુમસામ ભાસી રહ્યા છે. લોકો ગરમીના લીધે ત્રસ્ત છે. ત્યારે હવામાન ખાતાના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 36 કલાકમાં રાજ્યમાં હીટ વેવ ફરી વળવાની વોર્નિંગ ઇસ્યુ કરવામાં આવી છે. તારીખ 6 જૂનથી 9 જૂન દરમિયાન 44 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. ત્યારબાદ 10 જૂનથી 42 ડિગ્રી તાપમાન થવાની સંભાવના છે. કેમેરામેન ભાવિક પરમાર સાથે મીર દુધરેજિયા, ન્યૂઝ ઓનલાઇન, અમદાવાદ.